Tell me, student, if screen is visible to you all. No problem. Yeah, yeah, it's right now visible. Okay. So today we'll be discussing about the hypersensitivity. Do you know what is hypersensitivity? क्या है basically hypersensitivity? Undesirable reaction produced by normal immune system, including allergy and autoimmunity. Exactly. तो exaggerated रिएक्शन होता है, राइट? तो सब ने हाइपर सेंसिटिविटी, सब में कुछ ना कुछ जनरली होते हैं. सो व्हेन इम्यून सिस्टम वर्क्स properly it helps in elimination or removal of antigen from our body, right? So मतलब effector molecules, okay, and these effector molecules they generally induce local inflammatory response and removes antigen without damaging the host tissue. In certain conditions, okay, immune system does not work properly or sometimes overactivated, and it causes some deleterious effects which results in significant tissue damage in cases in sometimes in serious disease, even death also. Okay, such unwanted and inappropriate and damaging immune response is known as hypersensitivity. Okay, ठीक है. So you can see the slide. It is visible right now. Huh? Visible है ना? Yes, Dada, Yes, it sir. was It was visible quite. visible point. So it is a harmful immune response which produce tissue injury and may cause serious disease. Okay. कौन है? Okay. So इसमें कुछ कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था, शायद बेंगलोर के लोग देखे होंगे. दीघा में एक लड़की आई थी, ठीक है, और जो क्रैब है वो खाने के बाद वो मर गई. तो ये डेथ भी हो सकता है, तो ये ज़रूरी है कि इसमें किस चीज़ में एलर्जी है, ठीक है. किसी के हो सकता है, जैसे बहुत सारे सब्जी वगैरह में एलर्जी हो सकते हैं, ठीक है. एग में होता है, आ, कोई भी बेसिकली जो मैरिन एनिमल है इसमें इसमें एलर्जेंस बहुत होता है, ठीक है. और कुछ केस में टर्मिनोलॉजी सच एज एटोपी, एटोपी सुना जाएगा. ये इनहेरिटेड है, अगर इनहेरिटेड है तो वो हो जाएगा क्या, एटोपी, ठीक. To note down, you can note down the definition also. Classification. So initial classification are very earlier. Hans Jenser classified hypersensitivity into two parts. One is immediate hypersensitivity and another is delayed type of hypersensitivity. Okay. तो ये दो टाइप का है जनरली. इमीडिएट मतलब बहुत जल्दी होता है, और डिलेड उसमें टी सेल में जनरली टी सेल उसमें पार्टिसिपेट करता है. लेकिन उसके बाद जेल एंड कोम्स, ठीक है, जेल्स एंड कोम्स ने एक क्लासिफिकेशन दिया है जिसमें 4 टाइप्स है. टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी विच इज IgE, एंटीबॉडी मेडिएटेड. यू नो दैट IG एलर्जिक रिएक्शन में काम करते हैं, राइट? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और एंटीबॉडी मेडिएटेड. टाइप 3 which antibodies will see, ठीक. टाइप 3 एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड, generally second one IgG mediated. Third one is antigen antibody complex mediated, and fourth one, which one is cell mediated reaction and also called delayed type of uh, hypersensitivity, is mainly by TH cell. Okay, and it is cytokines mediated. And later, two additional types, type 5 and 6 reactions also proposed. Okay, type 5 it is also antibody mediated, and type 6 both antibody as well as cell mediated. Okay, so immediate hypersensitivity reaction is mediated by humoral antibody
and manifest within minutes to few hours. And the anaphylactic reaction initiated by antibody or antigen antibody complex are referred as immediate hypersensitivity because it occurs within minutes. Okay, so type 1, 2 and 3 hypersensitivity reactions, they are immediate type. And delayed, why? Delayed hypersensitivity reaction is mediated by sensitized CD4 plus T cell. And CD4 मतलब हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक क्या होगा? Helper T cell. Yes, and manifest slowly, usually after 24 hours or more. It is delayed because symptoms appear days after exposure to antigen. Okay, and in delayed type of hypersensitivity reaction, the effector molecules are various cytokines which are secreted from uh, CD4 plus T cell or helper T cell. Okay, DTH और delayed type of hypersensitivity reaction. ठीक, तो ये डिफरेंट टाइप का होता है. नाउ type 1 you can see. Okay, so already we have discussed type 1. It is basically mediated by IgE, antibody IgE, and it is also known as anaphylactic reaction or allergy, simple allergy. Okay, so allergy, it is mediated by some allergens, you know, such as pollen grains, dust and food components. डस्ट होने के बाद अगर डस्ट में होगा तो बहुत सारे क्या होता है, कफिंग वगैरह, स्नीजिंग ऐसे हो जाता है किसी किसी का. सो एलर्जेंस इंड्यूस ह्यूमरल इम्यूनिटी, humoral antibody response by the same mechanism as other soluble antigens in the generation of antibody secreting plasma cells and memory cells. But the difference is that the plasma cells secretes IgE class of antibody. Okay, IgE, okay, have high binding affinity to Fc receptor. Last day we have discussed about the Fc receptor, right? So it has a high affinity to the Fc receptor on the surface of tissue, mast cell and blood basophils. Mast cells and basophils bound by IgE are said to be sensitized. You can see the figure. Okay, ठीक, एंटीजन इसके साथ देखो आईजी पे बाइंड हो रहा है, राइट? कहाँ पे? एफसी रिसेप्टर हो रहा है कि नहीं? देखो तो बाइंड हो गया. इस स्टेज को क्या बोल रहे हैं? बोलो, सेंसिटाइजेशन, राइट? क्या? सेंसिटाइजेशन. एंड द लेटर exposure to the same allergen cross-linked to the membrane. Here you can see. So later exposure of the antigen, okay, cross-links the membrane-bound IgE on the sensitized mast cell and the basophil. They cause degranulation of some molecules. Okay, degranulation of some molecules. The molecules, there are some vasoactive amines. Okay, so degranulation causes release of these mediator which act surrounding tissue, causing vasodilation and smooth muscle contraction, which may be either uh, systematic or localized, and this effect is known as allergy. Okay, तो समझ में आ गया. ये क्या हुआ? एक एंटीजन है, वो उसके साथ IgE बाउंडेड है, सेंसिटाइज हो गया. ठीक, कौन सेंसिटाइज हुआ? किसके अंदर एंटीजन हुआ? मास्ट सेल और बेसोफिल. ठीक, उसके साथ IgE बाउंडेड है, री एक्सपोजर हो रहा है. किसका? एंटीजन का सेकंड एक्सपोजर हो रहा है. उसके बाद वो इम्यून रिस्पॉन्स वहाँ पे दिखाएगा और उसके रिजल्ट, एज ए रिजल्ट क्या होगा? वो डीग्रेनुलेशन होगा. डीग्रेनुलेशन. ठीक, सो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे
एलर्जी और एनाफाइलेटिक रिएक्शन में जनरली दो डोज होता है, ठीक है. फर्स्ट वन इज नोन एज सेंसिटाइजिंग डोज एंड सेकेंड वन इज शॉकिंग डोज, ठीक. सो पहले होता है कि प्रोडक्शन ऑफ आईजीई एंटीबॉडी. सो व्हेन एंटीजन और एलर्जन दे एंटर्स द होस्ट बॉडी, so production of antibody begins. So at first allergen is processed and presented by antigen presenting cell. Can you name some antigen presenting cells? Bolo, do you know some antigen presenting cells? If you don't know, Dendritic cell. yeah, and also macrophages, right? So then, so antigen presenting cells to helper cell, T helper cells. So activated T helper cells divide to form T helper and memory cell, and T helper produces interleukin 4. Remember, at the same time B cell bind to the antigen in the presence of APC and interleukin 4 gets activated. Okay, now the activated B cells divide to form plasma cells and memory cells. Okay, and this step, up to this step, the mechanism is quite similar with the normal humoral immune response. But the difference between type 1 hypersensitivity and the normal immune response that plasma cells produce IgE kind of antibody instead of IgM or IgG. Okay, then next stage is sensitization. We have already discussed what is sensitization. So Fc region of the IgE antibody has receptor on the surface of tissue mast cell or blood basophil. Okay, so the binding of IgE or mast cell and the basophil is known as sensitization. Okay, and they are known as now sensitized mast cell or basophil cell. Then second exposure or shocking dose of antigen. When same allergen enters into the host cell for the second time, antigen cross linked with the FAB region of, you know, FAB, what is FAB region of antigen? Okay, so now degranulation is happening. Okay, degranulation of heparin and some active molecules like histamine, heparin, serotonin, cytokines, leukotrienes, prostaglandins, they secrete. Okay, so anaphylactic reaction occurs. So this active chemical mediator acts on surrounding tissue, producing various symptoms such of allergy, such as vasodilation, smooth muscle contraction, mucus production, sneezing. Okay, so this is all about type 1 hypersensitivity. Okay, देखो ये फिगर बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही है. सो लोकलाइज अगर हाइपरसेंसिटिविटी बोला जाएगा तो क्या होगा उसमें? हे फीवर, ओके, विच इज एलर्जिक राइनाइटिस, एजमा, ओके, फूड एलर्जी, एटोपिक डर्माटाइटिस विच इज एक्साइमा, एंड सिस्टमेटिक एनाफाइलेसिस. मतलब सिस्टमेटिक मतलब systematic not systemic. Okay, so it is a shock like and often fatal state. Okay, which is initiated usually uh, by the allergen directly into the bloodstream or absorbed from the gut or skin. जैसे drop in blood pressure, smooth muscle contraction, suffocation, this kind of things. Okay, and localized limited to specific target tissue or organs. जैसे है फीवर हुआ, एजमा, फूड एलर्जी, एटोपिक रिएक्शन, दिस आर. ओके, अंडरस्टूड? समझ में आ गया कि नहीं? बोलो हाँ और ना. Yes, स्टूडेंट्स, sir. ओके ओके. नाउ type 2. Type 2 reaction involves antibody mediated destruction of the cell, specifically IgM or IgG. Okay, and it is also known as cytotoxic reaction. It is also known as cytotoxic reaction. Okay, the killing of cell can occur by one of three mechanisms. They are complement mediated cell lysis, optionalization, and antibody dependent cell toxicity. Okay, in this hypersensitivity reaction, specific antibody, just as we mentioned here,
IgG or IgM bound to the cell surface antigen and destroy the cell. If the cell is microorganism, killing of the cell is beneficial to host. However, in type 2 hypersensitivity, the cells are on RBC. We'll be discussing about very popular example. So here you can see one is complement activation, optionizations. Optionalization, last day we have discussed about the optionalization, right? And you know that what is complementation or complement system. Some complement protein are there in the blood system, which sequentially activated, and ADC is the antibody dependent cytotoxicity. Okay, so in case of complement mediated lysis, complement system, उसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन एज वी डिस्कस्ड. So when antibody bind to the antigen, such as microorganism or RBC, they form antigen antibody complex. So now this antigen antibody complex here, antigen antibody complex can activate complement system by various kind of mechanism. One is classical pathway, one is alternative pathway, another is lectin pathway. So activated complement proceeds in cascade mechanism. So when complement is activated on the surface of the cell, such as RBC, it causes lysis of the cell. क्योंकि उसमें लास्ट में क्या होता है, मैक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, राइट. टाइप 2 ADCC, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, राइट. तो उसमें क्या होता है, सो एंटीबॉडी बाइंड्स विद एंटीजन by its fab portion, you know that. And however, Fc region of the antibody has receptor on the cytotoxic cells. So antibody cross-link with the target cell microorganism, right? So most cytotoxic cell contain storage of hydrolytic and digestive enzymes. So these enzymes are released on the surface of the target cell. Okay. So here the antibody itself does not kill or destroy the cell, but rather mediated killing by presenting antigen to the cytotoxic cell. Okay, here. And the opsonization, third one is opsonization, you can see here. So when antigen enters into the host body, antibodies are produced, right? So antibodies bind to the antigen with the same mechanism through the FAB region, and FC region of the antibody remains free. Phagocytic cells such as neutrophil, macrophage and monocytes have receptor that can bind to this FC region of the antibody. Okay, here this region is known as here FC gamma receptor. In this case, antibody molecule directly cross-link with antigen with the phagocytic cell, and this cross-linkage activates phagocytic cells and increases the rate of phagocytosis. Okay, so these are the three types. A popular example here, blood transfusion reaction, erythroblastosis fetalis and autoimmune hemolytic anemia. ये तो सबने पढ़ा है ना. What is erythroblastosis fetalis? Someone please explain. क्या होता है इसमें, बोलो. Someone please. The question repeat करेगा. What is erythroblastosis fetalis? ওই মায়ের রক্ত যদি RH নেগেটিভ হয়, বাচ্চা যদি RH পজিটিভ হয়, সেক্ষেত্রে সেকেন্ড বেবি যদি RH পজিটিভ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ওই ব্লাডের এক্সপোজার ঘটে, তখন ওই कि थोड़ा सा अच्छे तरीके से बोल पाएगा क्या? और ये फर्स्ट प्रेगनेंसी के थ्रू होता है कि सेकंड प्रेगनेंसी, ये भी मेंशन करो. सेकेंड प्रेगनेंसी के थ्रू. Why not only in the first pregnancy? প্রথমবারে ব্লাডের কন্ট্যাক্ট হয় না, কিন্তু ওই সেকেন্ড মানে হ্যাঁ বলছি, প্রথমবারে যখন বেবি হয়ে গেল, তখন ওই তখন ব্লাডের কন্ট্যাক্ট হয়, তখন ওই মায়ের দেহে RH নেগেটিভের জন্য অ্যান্টি বডি তৈরি হয়ে যায়। এবং সেকেন্ড ক্ষেত্রে যখন সেকেন্ড বেবির যদি RH নেগেটিভ হয়, তখন যখন ব্লাড যাচ্ছে, তখন ওই RH অ্যান্টিবডিটা নেগেটিভ অ্যান্টিবডিটা গিয়ে ওই ব্লাডটা ক্লটিং করবে।
मतलब डिलीवरी के भले ही वो प्रेगनेंसी के दौरान मदर के सर्कुलेशन जो है वो एक्सपोज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो डिलीवरी के टाइम वहाँ पे तो फिटल जो अम्बेलिकल कॉर्ड है उसमें तो ब्लड तो वहाँ पे कांटेक्ट में आता है, राइट? हम्म? तो उस टाइम क्या होता है, आर एच स्पेसिफिक एंटीबॉडी तो बनेगा है, हाँ? म- होगा कि नहीं? हम्म। तो उसके बाद जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगा तो उस टाइम वो क्या करेगा, नेक्स्ट क्या करेगा, क्या होगा? क्योंकि सेकंड। आईजीजी, अगर आईजीजी एंटीबॉडी बन रहा है, राइट, तो आईजीजी एंटीबॉडी बन रहा है विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा, यू नो दैट, and it can destroy the fetal RBCs. It can destroy the fetal RBCs. Understood? Okay. হুম। I think it is clear. Now, type 3. Type 3 is the reaction of the antibody with antigen generates immune complex. So, antigen and antibody, that it's form a immune complex. Okay. In most of the cases, these immune complex they are removed from the blood circulation, but some immune complexes are removed by phagocytic reaction of phagocytic cells, and other immune complexes are first carried by the blood to the spleen, and where they are destroyed by the macrophages. And for that purpose, complement system is also needed. Okay. In some cases, large amount of immune complexes are formed and deposited on various body parts, and that leads to the tissue damaging. Okay, so the if the immune complexes are not removed from the blood, they accumulate on the wall of the blood vessels, okay, and on the tissue where filtration of blood and plasma occurs, such as, you know, glomerular membrane, synovial membrane. That's why glomerular nephritis is one kind of type 3 hypersensitivity. So type 3 hypersensitivity reaction is characterized by the deposition of immune complexes on various tissues, such as one of the blood vessel, as I mentioned. Tick. So deposition of immune complexes initiates a reaction which is which resulting in damage of surrounding tissue and cause inflammation. Okay, you can see here एंटीजन इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. रिमाटॉइड आर्थराइटिस, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस, these are different type of. Okay. Autoimmunity, it is one kind of type 3 hypersensitivity reaction in in case of large amount of immune complexes are formed and deposited in the tissue. So here you can see type 3 hypersensitivity reaction develops when immune complexes activate C3A, complement C3A and C3B. Okay, C3A and C5A. ठीक, C3 and C3A and C5A. C3 and C5A are lymphotoxin. They are lymphotoxin or anaphylactic. Note down that point. C3A and C5A complement के जो दो component है C3A and C5A, they are known as lymphotoxin or anaphylatoxin. Okay, and that causes localized mast cell degranulation. So degranulation of the mast cell releases vasoactive amines. You know that already we have discussed. Now C5A, C3A, and C5B, 6F, and they also react as chemotactic factors for the neutrophils. So it attracts neutrophil at the site of immune complex deposition. Here, point number 3. So it will attract. So C3B then act as opsonin by binding the immune complex, and neutrophil bind to the C3B. Okay, here, and
Later, neutrophil attempt to phagocytose the immune complex, but phagocytosis is not possible because of immune complexes are deposited on the basement membrane. So neutrophil releases here lytic enzymes. Okay, neutrophil releases lytic enzymes to destroy the immune complexes. These lytic enzymes causes tissue damage surrounding of the immune complex deposits and resulting hypersensitivity reaction. Furthermore, complement proteins can also contribute to the tissue destruction. तो ये बात समझ में आ गया क्यों है ये हो रहा है. कॉम्प्लीमेंट तो एक्टिवेट होके ये न्यूट्रोफिल के बुला दिया है इसमें, ठीक है, लेकिन न्यूट्रोफिल इज अनेबल टू फेगोसाइटोस एंड फॉर दैट पर्पस it will try to destroy, because why, because of this basement membrane के नीचे है, तो that's why it is secreting its destructive enzymes. Okay, and which causes tissue damaging and inflammation. Okay, that is type 3. Examples are glomerulus nephritis. Okay, synovial joint मतलब arthritis, it is one kind of type 3 hypersensitivity reaction. समझ में आया ना ये चीज क्या हो रहा है? हाँ, बोलो. আরেকবার বলে দাও এটা। देखो, इम्यून कॉम्प्लेक्स कहाँ पे आ रहे हैं? इसके वॉल में, ठीक है. तो उसके लिए वो कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या कर रहे हैं? एक्टिवेट, तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटेड हो गए, ठीक. इम्यून सिस्टम इम्यून कॉम्प्लेक्स में हुआ है, इसके थ्रू कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो गया है और उसको किसको बुलाया है? न्यूट्रोफिल को, ठीक है. C5a एंड C3a दे आर एनाफाइलेटॉक्सिन जो लोकलाइज मास सेल लोकलाइज इसमें डिग्रेडेशन करेगा, ठीक है. और C5a एंड C3a एज वेल एज C5b एंड 6-7 ये क्या है? केमोटेक्टिक फैक्टर. ओके, इट विल अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल. ओके, तुम आओ इसमें इसको डिस्ट्रॉय करो, लेकिन ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे है टिश्यूज. तो क्या करते हैं न्यूट्रोफिल इसमें C3b यहाँ पे कोड क्या है? C3b कोटेड इम्यून कॉम्प्लेक्स न्यूट्रोफिल इसके साथ बाइंड करेगा. C3b कोटेड, यहाँ पे देखो C3, ये देखो C3b रिसेप्टर है ऊपर, तो C3b कोटेड इम्यून कॉम्प्लेक्स के ऊपर ये बाइंड करेगा कौन? न्यूट्रोफिल, ठीक है. उसके बाद न्यूट्रोफिल अटेम्प्ट करेगा फैगोसाइटिस करने के लिए इम्यून कॉम्प्लेक्स को, ठीक है. इम्यून कॉम्प्लेक्स को फैगोसाइटिस करने के लिए वो ट्राई करेगा, लेकिन वो नहीं कर पाएगा, ठीक. वो नहीं कर पाएगा क्योंकि क्योंकि इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है वो बेसमेंट यहाँ पे देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन में वो है, ठीक. बेसमेंट मेम्ब्रेन में वो डिपोजिटेड है. इम्यून कॉम्प्लेक्स ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में डिपोजिटेड है. दैट्स वाई तब क्या करेगा न्यूट्रोफिल? इसको गुस्सा आ जाएगा. गुस्सा आने के बाद वो लाइटिक एंजाइम जो है इसमें वो इसमें डाल देगा, जिसके कारण क्या होगा? वो जो टिश्यूज है नीचे उसको डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो इन्फ्लामेशन हो जाएगा उसमें, ठीक है. तो समझ में आया? अब समझ में आया कि नहीं? হ্যাঁ। इम्यून कॉम्प्लेक्स एक्टिव इसको देखो, तो इसके एंटीबॉडी के एफसी रीजन इसमें है ना, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट बाइंड कर सकते हैं. कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटेड होके कॉम्प्लीमेंट खुद नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है. उसके थ्रू एंटीजन है, एंटीबॉडीज के साथ वो इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया है. फॉर्म करने के बाद कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेटेड हो रहे हैं, लेकिन उसका अकेला का काम नहीं है. वो न्यूट्रोफिल को बुलाएगा इसमें आने के लिए. न्यूट्रोफिल जो है वो नहीं ये काम कर पाएगा, ठीक है. तो उसके गुस्से के कारण वो इन्फ्लेमेशन हो रहा है. अंडरस्टूड और नॉट? তোমার ओके, কার্সারটা শো করছে না। नहीं दिख रहा है यहाँ पे? কার্সারটা শো করছে। सबके लिए हो रहा है क्या ये? कर्सर शो नहीं कर रहा है? No, sir.
ओके, अब देखो तो इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, किस में डिपोजिटेड है, ये वॉल पे दिख रहा है, रेड लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। লাইনটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু কার্ভ দেখা যাচ্ছে। हाँ Yes, ठीक है, yes. तो यहाँ पे देखो, तो रेड लाइन यहाँ पे तो इम्यून कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, ठीक, इसके थ्रू ये क्या है, C5a एंड C5a क्या बोला है इसने, एनाफाइलोटॉक्सिन, C3a एंड C5a, ठीक है, वो क्या करेगा, लोकलाइज्ड जो मास्ट सेल है उसका डिग्रेडेशन करेगा, ठीक है। सो इंटरमीडिएट साइज इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिट इन द टिश्यूज, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटेड हो रहा है इसके बाद यहाँ पे, जिसमें C3a ये लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन करेगा, उसके बाद इसके मास्ट सेल का अगर डिग्रेडेशन हो रहा है तो मास्ट सेल हिस्टामिन वगैरह वो रिलीज करेगा, ठीक है, जिसके मतलब उसके थ्रू इसमें क्या हो रहा है, तो vascular permeability of the blood capillaries it will increases, ठीक, and this facilitates deposition of the immune complex on the wall of the blood vessel, okay, तो इसके कारण लोकलाइज इन्फ्लेमेशन कारण ये डिपोजिट हो रहा है वो और भी अच्छी तरीके से। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट जो है C5a C3a और C5b ये सब मिलके केमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज करेगा, जो कि इसको बुलाएगा, किसको, न्यूट्रोफिल के, न्यूट्रोफिल भैया तुम यहाँ पे आ जाओ, आके इसको खत्म करो, तो ये इट विल ट्राई टू फैगोसाइटोस दिस मॉलिक्यूल, ठीक, करेगा। यहाँ पे न्यूट्रोफिल बैठ रहा है किस पे, C3b रिसेप्टर पे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो रहा है इसके ऊपर, क्योंकि इसके नीचे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक, मतलब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में अटैच हो गया है इम्यून कॉम्प्लेक्स, तो उसको ख़त्म ऐसे करो कि टिश्यू मतलब वो लाइटिक एंजाइम गुस्से के कारण वो लाइटिक एंजाइम यहाँ पे डिपोजिट कर रहा है, ठीक है, लाइटिक एंजाइम इसमें करने के बाद क्या हो रहा है, ये तो मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो गया और टिश्यूज भी यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है, समझ में आ गया, হ্যাঁ। ओके। नाउ टाइप 4, टाइप 4 और ये थोड़ा छोटा हो गया ना फिगर, ओके मैं यहाँ पे, ठीक है ना, सो टाइप 4, ओके, सो टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी आल्सो नोन एज डिलेड टाइप, ठीक है, डिलेड टाइप, वाई डिलेड टाइप वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, उसके बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे, ठीक है, और इसके लिए, ठीक है, हेल्पर टी सेल, सो मैकेनिज्म तो जनरली 48 to 72 आवर इसके टाइम होता है, ठीक है, T lymphocyte mediated type 4 hypersensitivity and two types of reaction mediated by separate T cell subset, okay, so what happens there, first same procedure, sensitization phase of the this type of hypersensitivity, so sensitization phase, we'll see this figure here, so this reaction begins with the sensitization by primary contact with the antigens, any antigen molecules, okay, and at first antigen is processed and presented by the antigen presenting cell to the CD4 Th helper cells, okay, CD4 plus Th cell are activated to form two type of subsets, okay, Th1, okay, here, so during helper T cells are clonally expanded by binding with the
MHC2 molecules, varieties of APCs have been shown to be involved in the activation of this reaction, okay, including Langerhans cells and macrophages. Okay, so helper T cells, they are primarily uh, activated during this phase, okay, and however in some cases CD8 or cytotoxic T cells are also found to induce in this reaction, okay, CD8 occasionally. Then effector phase में क्या होता है, a subsequent or second time exposure to the antigen induces this phase, okay. In this phase Th1 cell secretes varieties of cytokines, जिसका काम ही है varieties of cytokines रिलीज करना, जो कि IFN gamma, TNF beta, IL2, L3, GMC से ये ग्रेनुलोसाइट, मास्ट सेल, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर याद है ना, तो ये उसमें वो सीक्रेट कर देगा. So some which can activate some macrophages and some other non-specific inflammatory cells to the site of antigen infections. ठीक है. So macrophages are the principal effector of delayed type of hypersensitivity response. The activated macrophage exhibit increased level of phagocytosis and increased ability to kill the antigens by the various kind of cytotoxic lytic enzymes. So here also activated macrophage, it will secrete lytic enzyme and damage surrounding tissues. Okay, the influx and activation of macrophages in delayed type of hypersensitivity is important in the in-host defense. Okay, तो ये इसका किस्सा ये हो गया. अंडरस्टूड. इसमें टी टेस्ट एक होता है, ट्यूबरक्युलिन स्किन टेस्ट, वो एक टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है. ठीक है. सो इंटरसेलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्री एंड ब्रुसेल्ला, इसके अगेंस्ट ये होता है. ठीक है. तो टी टेस्ट जो है, ट्यूबरक्युलिन स्किन टेस्ट, इज वन काइंड ऑफ hypersensitivity, type 4 hypersensitivity reaction. Okay students, now tell me if you have any kind of confusion, any question you can ask me.